We will be talking about the poem for Anne Gregory, written by William Butler Yeats. Let us have a quick reading of the poem. Never shall a young man, thrown into despair by those great honey colored ramparts at your ear, love you for yourself alone and not your yellow hair. But I can get a hair dye and set such color there, brown or black or carrot, that young men in despair may love me for myself alone and not my yellow hair. I heard an old religious man but yesterday night declare that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair. William Butler Yeats, he was born in 1865 and he died in 1939. He was from Ireland, Irish nationalist. He was educated in London and Dublin. He was very much interested in folklore and mythology. He also won the Nobel Prize for Literature in 1923. This is how he looked. We found some difficult words in the poem. Let us talk about them. Rampart. It means earthen elevation around a place for fortification. जैसे आपने लाल किले को देखा होगा, उसके आसपास जो ऊंची बाउंड्रीज हैं, जो मेन कैसल होता है, जो मेन पैलेस होता है, उसके आसपास की जो बाउंड्रीज होती हैं, जो अपहिल्ड एलिवेटेड स्पेस होता है, जो उसके चारों तरफ उसकी प्रोटेक्शन के लिए बनाया जाता है, उसे रैम्पार्ट कहते हैं. री मीन्स अगेन एम्पेरर. एम्पेरर फोर्टिफाई, टेक पोजेशन ऑफ, तो किसी का जा करके उस पर कब्जा कर लेना, उस पर पोजीशन कर लेना. नेक्स्ट वर्ड इज डिस्पेयर. डिस्पेयर मीन्स होपलेसनेस. व्हेन यू कंप्लीटली लूज एवरी होप दैट यू हैव. जैसे आपने वो चैप्टर किया था लेंचो. लेंचो वॉज कंप्लीट होपलेस about his situation. He was in complete despair. So despair naturally destroys courage and stops all effort, but may produce a new kind of courage and fierce activity founded upon the sense that there is nothing worse to be feared. अगर हम इसे एक पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, एनी पर्टिकुलर पॉजिटिव होप. पर अगर दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, एंड देयरफॉर यू गेट अ डिफरेंट काइंड ऑफ करेज इनसाइड यू. William Butler Yeats, he was a dramatist, he was a poet, he won Nobel Prize for Drama. He also acted as a bridge between romantics and modernism. जब आगे चल के आप लिटरेचर और पढ़ेंगे तो आप रोमांटिक्स और मॉडर्निज्म के बारे में पढ़ेंगे. रोमांटिक्स वर्ड जो है यहाँ पे, इट मीन्स इमेजिनेशन, इट मीन्स मूविंग अवे फ्रॉम मटेरियलिस्टिक थिंग्स, इट मीन्स creativity, it means your love for nature. He was an Irish nationalist, but he did not involve himself in intense direct politics. Maud Gonne refused his marriage proposals because he couldn't commit to politics. He was very much interested in spiritualism, occultism, and astrology. So, before we will move towards the figures of speech, let us have a quick understanding of the poem. What is the poem about? अगर आप हेडिंग देखेंगे तो इस लिखा है कि ये कॉन्वर्जेशन है बिटवीन अ यंग मैन एंड अ यंग वुमन. नाउ व्हेन वी स्टार्ट रीडिंग द स्टैंजास, you will understand that the first stanza is by a young man, and then there is a reply by the young girl, young woman, and again there is a response of the young man. Let us understand. Never shall a young man thrown into despair by those great honey colored ramparts at your ear. अब यहाँ जो पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है वो मेटाफर है. रैम्पार्ट जो है वो उनके यंग वुमेन के हेयर के लिए यूज़ हुआ है. सो बेसिकली द कंपैरिजन ऑफ रैम्पार्ट्स विद द हेयर ऑफ द वुमेन. लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर. सो बेसिकली द यंग मैन इज सेइंग टू यंग वुमेन दैट कोई भी यंग मैन जो है हु इज़ थ्रोन इनटू डिस्पेयर, हु हैज़ लॉस्ट एवरी होप, बट there would be no man who would love you for you and not your hair. So basically वो he must be attracted to you for your outer appearance. आपकी जो physical characteristics है उससे attract होने के बाद वो he'll fall in love for you, but he'll not love you only for you alone. यानी he's talking about the mentality of people.
who fall for outer characteristics, physical beauty, but no one gets inside you and love you for what you are from inside. आप अंदर से कैसे हैं, आपका बिहेवियर कैसा है. तो हम मेटलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते हैं, हम आउटर ब्यूटी के पीछे भागते हैं. Poet is saying to that woman, every man would fall in love with you, but no one would fall in love for you yourself alone. Now read the reply of the woman. But I can get a hair dye and set such color there, brown or black or carrot, that young man in despair may love me for myself alone and not my yellow hair. तो इस पर जो वुमन है वो रिप्लाई करती है कि आई कैन चेंज द कलर ऑफ माई हेयर. मैं उनको हेयर डाई करा सकती हूँ दूसरे कलर से, ब्राउन से, ब्लैक से, कैरेट से. एंड मे बी दैट वुमन, दैट मैन लव्स मी फॉर माई सेल्फ अलोन. वो सिर्फ मुझे मेरे होने से, मेरे बिहेवियर से, मेरी सोल से प्यार करेगा, नॉट माई येलो हेयर. एंड ही वुड नॉट लव मी फॉर just for the sake of my hair. Then the man replies, I heard an old religious man, but yesterday night declare that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair. And then he replies that he had heard a man, old man, who believes in religion. He declared that there is only one in the whole world who loves you for who you are, and that is God. सो ही सेज, अगर कोई ऐसा इंसान है, कुछ है ऐसा, तो सिर्फ भगवान है जो आपको आपके होने के लिए आपसे प्यार करते हैं, एंड नॉट एनी फिजिकल बॉडी इमेज ऑफ यू. सो हेयर वी गेट एन अंडरस्टैंडिंग व्हाट द पोएट इज ट्राइंग टू कन्वे, दैट एक तरह की बॉडी इमेज जो सोसाइटी में चलती है, और देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन गॉड एंड द मैन एंड द कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट पीपल. सो वी शुड नॉट फोकस ऑन आउटर कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि विद एज ये सब टेम्पररी है. विद एज ये सब डिसअपियर हो जाएगा. द ओनली थिंग दैट रिमेन्स इज द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल, is how he is from inside, how he looks at things, how his way of or behavior, how he, the kind of thought processes that he or she has. So it clearly differentiates between the inner beauty and the outer beauty. Let us see the figures of speech that are used in this poem. First, I told you about the metaphor. Metaphor is posits equivalence between seemingly dissimilar things. It equates those two things not because they actually are the same, but for the sake of comparison or symbolism. तो दो चीज़ों के बीच में comparison हो रहा है. और यहाँ पे देख सकते हैं, thrown into despair by those great honey colored ramparts at your ear. तो ramparts को हेयर से कंपेयर किया हुआ है. इसके बाद एलिट्रेशन जो हम बार बार देखते हैं, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स, जैसे इस लाइन में देखिए, दैट यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन, मैन मे माई सेल्फ एंड नॉट माई येलो हेयर. और अगेन लास्ट लाइन में मा साउंड रिपीट हो रहा है. इसके बाद आप नेक्स्ट में देखिए, यह साउंड रिपीट होगा, लव यू फॉर योर सेल्फ, यू एंड योर सेल्फ अलोन, एंड नॉट योर येलो हेयर, you, yourself, your, yellow. So this is the example of alliteration. Next we have synecdoche. It represents a part of a whole. तो यहाँ येलो हेयर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एन को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो हमने सिर्फ हेयर की बात की, बट वी द कंप्लीट इंडिविजुअल केम इन टू आवर माइंड. इसके बाद एपोस्ट्रॉफी है. इट्स अ डायरेक्ट एड्रेस टू समवन हु इज़ नॉट प्रेजेंट. तो यहाँ पे गॉड, ही इज़ नॉट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ कॉन्वर्जेशन बिटवीन द यंग मैन एंड द वुमेन, बट वी आर रेफरिंग टू गॉड. So this is an example of apostrophe. Then we have anastrophe. This is the inversion of sentence structure. For example, हम इसको ऐसे लिखते हैं, I heard an old religious man but yesterday night declared. So an old religious man declared yesterday night, है ना. तो जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वो इन्वर्ट हो जाता है. जो लास्ट में आना चाहिए वो पहले आता है, जो पहले आना चाहिए वो लास्ट में आ जाता है. तो दिस एग्जाम्पल ऑफ anastrophe. Then we have the rhyme scheme, A B C B D B. Let us check it. A B C B D B. So main, man is one sound A, despair is another sound B, colored is another sound C. Then we have ear. Now this rhymes with the despair. Man sounds with, then we have alone, and hair rhymes with ear. तो अगर हम पहले साउंड को A दें, फिर despair को B, फिर हम colored को C साउंड दें,
तो फिर हमारे पास ईयर रिपीट हो रहा है, तो फिर से वो बी हो जाएगा, यानी ए बी सी बी alone is a different sound, and then here rhymes with ear. So again last we will have B. So we have reached to this A, B, C, B, D and B. So here we come towards the end of the poem. Read the poem, understand the lines, understand the figures of speech used, and then write your answers accordingly. If you have any doubt, you can write your doubts in the comment section. Thank you.